Good afternoon, everyone. Good afternoon, all. Welcome to Pratham Test Prep. Okay. Yes, please confirm me. My voice is audible. Screen is visible to everyone. Yes, please confirm. My screen is visible to everyone. Yes, please confirm. Yes, good afternoon. Good afternoon. Yes, okay. So this is the topic cube. As you all know, this is one of the very, very important topic from reasoning, right? And this is the topic जिससे question थोड़े से tricky and difficult हो सकते हैं in your exam, right? So make sure आपको सारे type के questions related to cubes and cuboids आने चाहिए, right? So we'll discuss every single question जो आपके exam के लिए expected है from the topic cube, right? Cube and cuboid, both the topics, right? I hope कि आपने cuboid को कैसे solve करते हैं, most of the students को नहीं पता होगा, but we'll discuss every question related to cube and cuboid in the session, right? So cube generally, as you all know, अगर हम cube की बात करते हैं, see in our exam ना, so cube is what? Cube is nothing but a 3D figure, right? As you all know, cube is a 3D figure, right? Cube is a 3D figure. Why 3D figure? Because cube is having length, breadth, and height, 3 dimensions, right? One is length, breadth, and height. So this is one 3D figure. So we'll consider all the 3 dimensions for solving any particular question related to cube. कोई भी question हमें solve करना है, consider length, breadth, height. Okay, let's say very first thing, how many faces are there in a cube? How many faces? Total we have 6 faces in any cube, right? Number of edges, how many edges are there? Total 12 edges. And how many vertices or corners? How many vertices or corners in a cube? Total we have 8 corners. In any cube, total we are having 8 corners, right? 1, 2, 3, 4. All 8 corners are visible, right? These are the corners or vertices. And edges, how many edges? Total 12 edges and 6 faces. Correct? This is the point. We'll use this point later. Okay. So generally, क्यूब से हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, राइट? वन इज बेस्ड ऑन कटिंग ऑफ अ क्यूब, एंड सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पेंटिंग ऑफ अ क्यूब, जिसमें हम क्यूब को पेंट कर देते हैं, राइट? सो जनरली 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कटिंग एंड पेंटिंग. अगर आपको कटिंग समझ आ जाता है, अगर ये वाला टाइप आपको समझ आ जाएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू पेंटिंग. Right. So the important part is cutting, how to cut a cube in n number of smaller or equal or identical cubes. तो कैसे कट करते हैं? What is cutting of cube? कैसे होता है? Cube and cuboid दोनों से related. Cube and we'll also discuss same question related to cuboid, right? Same question related to cuboid also. So first we'll discuss questions related to cutting of cube, then painting of a cube. ठीक है? So as you all know, what is the formula for volume of a cube? Volume. See, every single concept is based on this formula. Volume of a cube is a cube or side cube or n cube. हम कुछ भी बोल सकते हैं, right? That is nothing but length into breadth, into height, right? All 3 are equal in case of cube. So the generalized formula is n cube or a cube. Length is n, height is n, and breadth is also n. All 3 dimensions are n, n, n. So the formula is n cube. Okay? We'll use this formula. Volume of a cube is nothing but length into breadth into height in case of cube and cuboid. So very first question जिससे हमारा concept develop होगा related to cube, right?
This says minimum number of cuts required to cut a large solid cube into 216 small, equal, and identical pieces. Right? This is the question. What it says कि हमको एक बड़े large solid cube को cut करना है in 216 small, equal, and identical pieces. Then minimum number of cuts required. हमें ये सब करने के लिए minimum कितने cuts की requirement होगी? Minimum. We are looking for minimum number of cuts to do so, right? So कितने parts में divide करना है? 216. कैसे cutting होगी cube की, right? So cutting of cube generally एक तो मेथड हम विजुअलाइज कर ले. दिस इज द क्यूब जिसको हमने 216 पीसेस में कट किया है, राइट? आपको आई होप कि आपको क्यूब विजिबल होगा. बट ये कैसे करते हैं? जनरली एग्जाम में आप 5 सेकंड में कैसे आंसर करोगे वो समझते हैं, राइट? सो आई टोल्ड यू फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, राइट? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू height, or that is equals to n cube, correct? Because all three, length, breadth, and height, are equal in case of a cube. So here total, this cube is divided in 216 pieces, right? That means the total volume of this cube is 216. The volume of this cube is 216 because this large solid cube is divided in 216 pieces, or I can say this cube is made up of 216 small, equal, and identical pieces, right? So the total volume is 216. Here this number is cube of 6. 216 is cube of 6, so this is nothing but 6 into 6 into 6, right? Means length is divided, volume is divided in 216 pieces, length is divided in 6 pieces, breadth is divided in 6 pieces, and height also divided in 6 pieces. So the volume is 6 into 6 into 6, right? So tell me now one simple thing. Let's say this is one line, right? Length, and I need to divide this length in 2 pieces. How many cuts required? By using one cut only. If I need to divide this in 2 pieces, right? मुझे divide करना है इसको 2 pieces में. How many cuts will require? Only one cut will require to do so, right? By using one cut, I can divide this length in 2 pieces. Let's say I need to divide this in 3 pieces. How many cuts required? It will require 2 cuts. By using 2 cuts, 1, 2, and 3 pieces. 2 cuts, right? Let's say similarly, I need to divide this length in 4 pieces. Then how many cuts required? If I need to divide this in 4 pieces, 1, 2, 3 cuts. So 1, 2, 3, 4 pieces, 3 cuts. So generalized way, we can say to divide any cube in n pieces. How many cuts required? N minus 1 cuts required, right? N minus 1 cuts needed, right? Similarly, here in this question, I need to divide my length. ठीक है, ध्यान से समझना. This is very important concept, right? On the basis of this, I need to divide my length in 6 pieces. Then how many cuts required? Let's say this is the length, right? I need to divide this length in 6 pieces. How many cuts required? Yes, anyone? Try to answer. If I need to divide my length in 6 pieces, how many cuts required to divide length in 6 pieces? Because see, this is divided in 6 pieces, right? These are the cuts, right? How many cuts? 5, perfect. Means to divide length in 6 pieces, I need 5 cuts. Similarly, to divide the breadth in 6 pieces, how many cuts required? Again, I need 5 cuts. To divide this height, see, this is the height. This is divided in 6 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces by using 5 cuts, right? Means length 5 cuts, breadth 5 cuts, height 5 cuts. So total how many cuts? 5 plus 5 plus 5, 15 cuts. So minimum 15 cuts required to do so, to divide a large solid cube in 216 pieces. Means isko aap orally, verbally solve kar sakte related to this question. Any doubt, any confusion? Clear to everyone?
total 15 cuts required to cut a large solid cube in 216 pieces. Clear to everyone? Why this? Why 15? Why not 18 or any other number, 36 or? Clear to everyone? Volume, total quantity is 216. Length 6, breadth 6, height 6. So because 6 cube is 216. For 6 cuts, it required, for 6 pieces, it required 5 cuts, 6 pieces, 5 cuts, 6 pieces, 5 cuts. So total 15 cuts. So minimum cuts required is 15, right? So one question for you all, try to answer this question. Everyone, minimum minimum number of cuts required. You all have only 20 seconds for this question, right? You all have 20 seconds. Try to answer. Let's see how many of you can answer within 20 seconds. And question says minimum number of cuts required to cut a large solid cube into 125 small, equal and identical pieces. आपको किसी large solid cube को divide करना 125 pieces. Very good. I got one answer. Abhishek, very good. Khushi, very good. Very good. Large solid cube is divided in one. Very good. Excellent. PUBG star. Samrid, very good. Very good. Excellent. Okay. So again, you can orally solve this question, right? Now, volume is what? Similar question, length into breadth into height. So here, volume is 125, right? So length, breadth, and height are 5 and 5 and 5. I need to divide my length in 5 pieces, 4 cuts and 4 cuts. So my final answer is 4 plus 4 plus 4, 12 cuts needed. So the logic is, किसी भी minimum, if I'm looking for minimum number of cuts, मुझे length, breadth and height में equal number of cuts करने पड़ेंगे in case of a cube. Then only I'll get minimum. जब ये number of cuts देखो, 4 cuts in length, 4 cuts in breadth, 4 cuts in height, ये अगर equal नहीं होगा तो you'll not get the minimum value, right? For minimum value, in case of cube, cuts should be equal in length, breadth, among length, breadth and height. Equal cuts. 4 cuts in length, 4 cuts in breadth, 4 cuts in height. अगर ये 4, 3, 5 कर देंगे तो आपके पास ये आंसर नहीं आएगा, ये 125 पीसेस में नहीं डिवाइड हो पाएगा, मींस ये मिनिमम आंसर नहीं आएगा. मिनिमम आंसर के लिए द कंडीशन इज दिस शुड बी इक्वल कट्स अमंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. इक्वल नंबर ऑफ कट्स हमें करने पड़ेंगे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. करेक्ट? सो नाउ रिवर्स कर देते हैं क्वेश्चन को, राइट? नाउ क्वेश्चन सेज maximum number of identical pieces a cube can be cut into by 9 cuts. Now पहले क्या करना था? Number of cuts find करने थे. Now this time cuts are given. You have 9 cuts. By using 9 cuts, in maximum how many pieces a large solid cube can be cut into? You have 9 cuts. आप 9 cuts से किसी large solid cube को maximum कितने identical pieces में divide कर सकते हैं? This is the question. Yes, everyone try to answer. By using 9 cuts only, in maximum how many pieces a large solid cube can be cut into? Okay. So again, the concept is same. Volume is equals to length into breadth into height. ध्यान से समझना, right? 9 cuts we have, total 9 cuts. You have total 9 cuts. ठीक है? So I told you for maximum value, अगर मुझे number of pieces को maximize करना है और number of cuts को minimize करना है, तो length, breadth and height में number of cuts ना equal होने चाहिए in case of a cube, right? If we are solving any cube, number of cuts equal होने चाहिए. So divide this 9 in 3 equal parts. Total 9 cuts. 9 को 3 parts में divide करेंगे. 3 cuts in length, 3 cuts in breadth, and 3 cuts in height. Right? Length 3 cuts, breadth 3 cuts, height 3 cuts. So by using 3 cuts, अगर आपने कोई भी length है, this is the length. Let's say this is one length. इसमें 3 cuts से आप कितने pieces में इसको divide कर लोगे? 1, 2, 3 cuts.
So this length is divided in how many pieces? 4 pieces, right? Now, this is divided in 4 pieces by using 3 cuts, 4 pieces. By using 3 cuts, breadth is divided in 4 pieces. By using 3 cuts, height is divided in 4 pieces. So we are looking for volume, length into breadth into height, that is 64. 64 small equal and identical cubes. By using 9 cuts, maximum a large solid cube can be cut into 64 small equal and identical pieces. Got it now? Why not 1000? आपने क्या किया? 9 cuts, 9 cuts, 9 cuts, 10, 10, 10 कर दिया ना? Total we have 9 cuts. We have total 9 cuts. उन्हीं 9 cuts को equal pieces में divide करना. Got it now? Clear? Why 64? Why not 1000 or any other number? Right? So कभी भी for minimum number of maximum number of pieces हमको cuts को equally divide करना पड़ेगा among length, breadth and height in case of a cube. Correct? Okay. So one more question for you. Try to ठीक है. इससे पहले I'm giving you one more question. Yes, everyone try to answer for 12 cuts. If you have 12 cuts, in maximum how many pieces a large solid cube can be cut into by using 12 cuts. So 12 cuts से हम किसी बड़े cube को कितने pieces में divide कर सकते हैं? Just try to answer. By using total 12 cuts, maximum number of identical pieces a cube can be cut into by 12 cuts. Excellent, Abhishek. Very good. Very good. Similar concept हम cuboid में भी use कर सकते हैं. I'll tell you कि cuboid की cutting कैसे होती है after this, right? First हम लोग cube करेंगे, then cuboid की cutting भी देखेंगे कैसे cutting होती है. Excellent. Avni, correct. Khushi, very good. So what we have 12, divide this 12 in 3 equal parts because this is cube, length, breadth, and height. So 4 cuts in length, 4 cuts in breadth, and 4 cuts in height. So by using 4 cuts, length is divided in 5 pieces, breadth is divided in 5 pieces, and height also divided in 5 pieces. So you'll get 125 pieces. That large solid cube will be divided in 125 small equal and identical pieces by using 12 cuts. Okay? Correct? Okay, so let's say now cube की जगह अगर थोड़ा सा figure मेरा disturb हो जाएगा, what is the least number of cuts required to cut a cube into 180 identical pieces? See, अगर आपके पास यहाँ पर ना simple इसके 180 को एक बार मैं यहाँ पर हटा के एक बार ये लिख लेता हूँ 343, तो आंसर क्या होता? एक बार मुझे कंफर्म कर दो जल्दी से. Now your question is 180 को हटा देते हैं, फिर उसके बाद 180 सॉल्व करेंगे. What is the least number of cuts required to cut a cube, a large solid cube into 343 small equal and identical pieces? Agree? This is for IPM. Yes, बच्चे IPM में cube का level बहुत ही अच्छा होता है. ठीक है, तो make sure कि IPM के लिए, IPM में किसी भी एग्जाम की बात करो तीनों में से, ठीक है, IPM में क्यूब के क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा होता है. तो मेक श्योर कि आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने होंगे. उसके लिए आपको बेसिक्स पता है तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली कर लेंगे, राइट? बट उसके लिए आपको बेसिक्स पता होना चाहिए क्यूब का. Yes, what is the least number of cuts required to cut a cube into 343 identical pieces? Okay, I got 2 answers. Khushi says 24, Abhishek says 18. Yes, other students. What is the least number of cuts required to cut a cube into 343 identical pieces? Okay, so मैं फिर से explain कर रहा हूँ. मैंने क्या बोला था? Volume of a cube. इसके बाद हम cuboid की बात करने वाले हैं. ठीक है, volume of a cube is given by length into breadth into height. All 3 are equal in case of a cube. So the generalized formula is n cube. Or a cube or side cube, right? In case of any cube. So here total volume is 343.
343. Total volume is 343. Length into breadth into height. So ये क्या होगा? 343 is a perfect cube. 7 cube. That means length into breadth into height. ठीक है? 7 into 7 into 7. Length is divided in 7 pieces. So how many cuts? 7 pieces के लिए. How many cuts? 6 cuts. Because मुझे अगर length को मैंने 7 pieces में divide करना है तो it will require 1, 2, 3, 6 cuts. And कितने pieces में divide हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. देखो 7 pieces के लिए how many cuts needed? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 6 cuts. Similarly, breadth is divided in 7 pieces. So how many cuts required? 6 cuts. To divide height in 7 pieces, how many cuts required? 6 cuts. So 6 plus 6 plus 6, total 18 cuts. आपने क्या कर लिया? 7 pieces के लिए 8 cuts, 8 cuts, 8 cuts. Is it? No. ये तो 7 pieces आ गए ना यहाँ पर. Means your length is divided in 7 pieces. So 7 parts में divide करना length को. So I need 6 cuts. 6 cuts in breadth and 6 cuts in height. Total 18 cuts. Got it? Now please confirm me. एक बार जल्दी से बता दो ये क्या समझ आ गया? Cube. How to cut a large solid cube in equal and identical pieces. This is for cube. Yes. Please confirm. Is this clear to everyone? Cutting of cube. जल्दी से बताओ. कटिंग ऑफ क्यूब इज क्लियर. अदर फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूबॉइड. अगर क्यूब क्लियर है देन क्लियर नाउ. ओके परफेक्ट. सो क्यूबॉइड की कटिंग. नाउ सिमिलर क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वाज फॉर 343. नाउ 180 पीसेस में डिवाइड करना. ठीक है 343 हमने कर लिया. नाउ 180 पीसेस. 180 तो किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता, राइट? नाउ वॉल्यूम सेम फॉर्मूला. अभी ध्यान से समझना व्हाट इज द लॉजिक. जब क्यूब की जगह परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो क्या करते हैं, राइट? वॉल्यूम इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. करेक्ट? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. सो योर वॉल्यूम इज 180. ये परफेक्ट क्यूब तो किसी का भी नहीं होता, बट इस नंबर को ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करना है ना जितना मैक्सिमम लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एक दूसरे से इक्वल हो सकते हैं. जितने भी नियरेस्ट इसके पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं. लाइक 180 के फैक्टर्स अगर आप करके देखोगे, 180 इज नथिंग बट 6 into 6 into 5. यही होता है ना. 180 इज 6 into 6 into 5. देखो इससे ज्यादा इक्वल नहीं हो सकते लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. मैक्सिमम इतना इक्वल हो सकते हैं 6, 6, 5. बिकॉज आई नीड टू डिवाइड this this large solid cube in 180 pieces, right? I have one large solid cube and I need to divide this in 180 pieces. So length, breadth and height में कितने pieces में divide कर सकता हूँ? Length 6 pieces, height 6 pieces and 5 pieces. अच्छा अभी किसी के माइंड में ये आएगा ना कि इसको कुछ और भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते थे. 10 into 9 into 1, right? Sorry 2. 10 into 9 into 2 ये क्यों नहीं किया? तो लॉजिक इज इन वैल्यूज को जितना मैक्सिमम पास वाली वैल्यूज हो सकती है ना, जितना मैक्सिमम इक्वल हो सकते, सिमेट्रिक कर सकते हैं, उतना सिमेट्रिक करना है इन वैल्यूज को. मैक्सिमम सिमेट्रिक करना है. जितने ज्यादा इक्वल हो सकते, जितने ज्यादा पास हो सकते हैं, उतना ही आंसर आपका एक्यूरेट हो, राइट? सो 180 के ऐसे फैक्टर्स कौन है? 6 into 6 into 5. ठीक है. सो अब यहां से आप आंसर कर सकते हो 6, 5 cuts, 6, 5 cuts, 5, 4 cuts. So total 14 cuts needed. That is your final answer. To divide a large solid cube in 180 pieces, it will require 14 cuts, minimum 14 cuts. Right? इससे minimum possible नहीं है. This is the minimum number of cuts to divide a large solid cube in 180 pieces. मुझे बताओ समझ आई बात? Let's say similar. मैं थोड़ा सा और यहाँ पर इससे और अच्छा करते हैं और क्लियर करते हैं, right? So that आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. Let's say 180 की जगह, ठीक है, कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं. 180 की जगह let's say 36 गिवन है यहाँ पर. Let's say 36. Now tell me 36 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे? Yes, everyone. जो मैक्सिमम सिमेट्रिक होंगे, मैक्सिमम इक्वल होंगे, पास होंगे. बिल्कुल. ट्राई टू आंसर फॉर 36.
What is the least number of cuts required to cut a cube into 36 identical pieces? 36 equal and identical pieces. Yes, everyone try to answer. Khushi, very good, excellent. Very good. Yes, I need more answers. Very good. Very good. So I hope this is clear to everyone. 3 into 3 into 4. 3 3s are 9, 9 4s are 36. These are the number. These are the factors of 36. So 36 के लिए कितने cuts हो जाते हैं? 3 के लिए 2, 2 and 3. 4 plus 3, 7 cuts needed. Excellent. Very. Cutting of cuboid is clear now. Yes, everyone. Cutting of cuboid is clear to everyone. Cuboid की cutting कैसे करते हैं? जल्दी से मुझे बताओ. If this is clear, then try to answer this question. If cutting of a cuboid is clear, very good. 7. For the last question, correct answer was 7, right? So what is the least number of cuts required to cut a cube into 100 identical pieces? Now this time you need to cut a large solid cube in 100 identical pieces. Now tell me how many cuts required? How many cuts required? Yes, try to answer. Let's see how many of you can answer. Let's see. कितने बचे मुझे? I got very good one answer. Khushi, very good, excellent, very good, very good, very good. What is the least number of cuts required to cut a cube into 100 identical pieces? Yes, जल्दी से बताओ answer for this question. 100 identical pieces. Very good. Excellent. Very good. This time volume is 100. So such factors जो बिल्कुल पास symmetric, maximum symmetric factors of 100. That is 5 into 5 into 4. Very good. All are correct. Excellent. 5 into 5 into 4. Right. So for 5, I need 4 cuts, 5 pieces, 4 cuts, 4 pieces, 3 cuts. So 4 plus 4 plus 3, that is 11 cuts needed. Right. This is how you'll do cutting of a cuboid. Right. This is for cuboid. जब आपका perfect cube वाला figure नहीं होगा, cuboid वाला figure होगा, तो उसकी cutting कैसे करते हैं? This is the approach method. Right. Excellent. All are correct. Very good. I hope this is clear to everyone. Now moving to the next concept, right? This is again one more question based on cutting of a cube. अगर difficult question होगा, examiner को थोड़ा सा tricky करना होगा question. So this is one question. If a cube is cut into identical pieces by giving 8 cuts, each parallel to the same pair of faces, then maximum number of identical pieces that can be made, there can be 2 more cuts is. So what question says, total you have 8 plus 2, 10 cuts, right? Total here you have 10 cuts. Now question says, by using these 10 cuts in maximum how many pieces, right? A large solid cube can be, sorry, total you have 10 cuts, 8 are parallel to a common axis, right? किसी भी common axis, किसी भी face के parallel में 8 cuts करने, and ये 2 cuts you are free कहीं भी कर सकते हो. तो maximum in 10 cuts से किसी cube को आप कितने pieces में divide कर सकते हैं? But here the condition is these 8 cuts should be parallel to what we have given,
8 cuts each parallel to the same pair of faces. किसी same pair of faces के parallel में 8 cuts करने and 2 cuts you are free, कहीं भी कर लो आप. So maximum number of pieces you'll get by doing so. ठीक है, total 10 cuts, 8 each parallel to the same pair of faces. 2 you are free, कहीं भी कर सकते हो. Again the concept is same, volume is equals to length into breadth into height. So yes, anyone? Which option is correct for this question? So see what we have given कि 8 cuts को तो हमने क्या करना, किसी common axis के parallel में करना है. इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझना. राइट, क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी. मींस आपने लेंथ के, आपने हाइट के, जो ये वाली सरफेस है ना, इसके पैरेलल में, ये वाली सरफेस के पैरेलल में आप 8 कट्स कर लो. लाइक 1 पैरेलल कट्स करने 8, 2 कट्स, 3 cuts, then 4 cuts, then 5 cuts, 6, 7 cuts, and let's say these are 8 cuts. फिगर को थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है. Let's say these are the 8 cuts. So आपने किसी एक हाइट में 8 कट कर दिए, राइट. तो आपने हाइट के लॉन्ग में आपने कर दिए 8 कट्स, ठीक है. हाइट के लॉन्ग आपने कर लिए 8 कट्स. नाउ क्वेश्चन सेज टोटल यहां पर आपने 8 कट्स कर लिए. नाउ यू आर लेफ्ट विद 2 कट्स. वो कहीं भी आप कर सकते हो. तो उसमें मैक्सिमम करने के लिए जो रिमेनिंग कट्स होंगे उनको लेंथ एंड ब्रेथ में इक्वली डिवाइड करना होगा. आपने लेट्स से 4 होता तो 2 डिवाइड कर देते. नाउ यू आर लेफ्ट विद 2 कट्स जो आप कहीं भी कर सकते हो. तो वो रिमेनिंग जो सरफेसेस है ना, वहां पर इक्वली डिवाइड कर देना है. 1 कट इन लेंथ and 1 cut along the breadth, 1 cut. So total हो गए 10 cuts. ये 8 cuts इसको डिवाइड करेंगे 9 पीसेस में. ये 1 कट डिवाइड करेगा 2 पीसेस में, एंड ये 1 कट डिवाइड करेगा इन 2 पीसेस. सो टोटल 9 2 18 2 36 पीसेस में ये डिवाइड होगा. दिस इज व्हाट वी हैव गिवन कि जो ये 8 कट्स है ना, ये पैरेलल है एक दूसरे के. These 8 cuts are parallel to a common surface, right? कोई भी पैरेलल फेसेस के कॉमन पैरेलल में किए हुए. These 8 cuts are parallel and you are free. ये बचे हुए कट्स आप कहीं भी कर सकते हो. तो इनको क्या करते हैं, बची हुई सरफेसेस में इक्वली डिवाइड करते हैं. यू आर लेफ्ट विद 2 cuts. 1 आपने लेंथ के एक ऐसे कट कर लिया आपने, एंड एक कट आपने ऐसे कर लिया, राइट. सो दिस इज डिवाइडेड इन 36 पीसेस. दैट इज द फाइनल आंसर. गॉट इट? इज दिस क्लियर? जल्दी से मुझे बताओ एक बार हमने क्या किया. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. दीज आर 8 कट्स जो आपने पैरेलल करने थे. इट विल डिवाइड द क्यूब इन 9 पीसेस, राइट. नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 कट्स. उनको इक्वली डिवाइड कर देना. रिमेनिंग जो भी हमारी डायमेंशंस है लेंथ एंड ब्रेथ में, 2 इज डिवाइडेड एज 1 कट एंड 1 कट. सो टोटल 2 into 2 into 9, 36 pieces, right? Got it now? अभी जल्दी से मुझे एक बार कंफर्म कर दो, क्या ये समझ आ चुका है आप लोगों को? क्या ऐसा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाएंगे आप लोग? यस, ओके. आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, राइट. यस, ट्राई टू आंसर एवरीवन. आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन. इफ अ क्यूब इज कट इनटू आइडेंटिकल पीसेस by giving 6 cuts each parallel to the same pair of faces, then maximum number of identical pieces that can be making 2 more, this is not mere, 2 more cuts, right? 2 more cuts is, yes. Now try to answer. Yes, everyone. How many pieces? Number of pieces. I need answer from everyone. So 3, you can divide it like 1 and 2. If that is 5, you can divide it like 2 and 3, right? I said maximum symmetric, right?
5 को ऐसे 2.5 तो नहीं कर सकते, राइट, कि 2.5 कट्स यहां पर कर देंगे एंड 2.5 यहां पर, नो. The maximum symmetry is 3:2. Got it? Okay. Volume is equals to length into breadth into height. 6 cuts along the height, 6 cuts. Now we are left with 2 more cuts, 1 cut and 1 cut. So 2 pieces, 7 pieces. 7 twos are 14, twos are 28 pieces. Excellent. Great. In case, let's say if number is like 2, 4, 6, 8, you can divide them equally. But if number is odd number, like 7, divide it like 3 cuts in length, 4 cuts in breadth. Along the breadth, 4 cuts. Right? Clear? Got it? Okay. So one more question. Right. One more type based on cutting of a cube. Right. This is again difficult question. Question को थोड़ा सा और tricky करना होता तो examiner कैसे question पूछेगा? This is one question. A large cube is cut into 3, 4, 3 identical small cubes. 3, 4, 3 identical small cubes. How many more such small cubes will be required to cover this cube completely? Means you have one large solid cube and you need to cover that cube completely, right? You need to cover that large solid cube completely. So आपसे पूछ रहा है आपके पास एक बहुत ही बड़ा cube है, right? This is one cube, let's say. You need to cover this large solid cube. अगर इस cube को कट करेंगे कहता है तो ये कितने पीसेस में कट हो सकता है? 3, 4, 3 पीसेस में. तो ऐसे ही कितने स्मॉल पीसेस चाहिए होंगे टू कवर दिस क्यूब कंप्लीटली? मींस इसको, इसके 6 फेसेस को अच्छे से कवर करने के लिए, पूरी तरीके से कवर करने के लिए हाउ मेनी क्यूब्स रिक्वायर्ड, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स रिक्वायर्ड? जस्ट ट्राई टू आंसर. आपको इसको, इसकी ऊपर वाली सरफेस भी कवर करना है, नीचे से भी इसको कवर करना है, इधर से भी कवर करना है. मींस इसकी 6 सरफेसेस को पूरी तरह कवर कर लेना है. तो ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी टू कवर दिस क्यूब कंप्लीटली? यस, ट्राई टू आंसर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन इज वेरी इजी, राइट? यस, ट्राई टू आंसर. हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स रिक्वायर्ड टू कवर दैट क्यूब? A large solid cube can be cut into 3, 4, 3 identical pieces, right? And how many such small cubes required to cover that large solid cube completely? Very good. I got one answer. Very tricky, very easy question. You can answer this question now within 10 seconds. I'll give you the trick. I'll give you the method how to solve such questions, right? Okay. ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना, राइट? हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. जनरली व्हाट वी हैव गिवन हियर, वॉल्यूम. आई गॉट सम आंसर्स. वेरी गुड, वेरी गुड. वॉल्यूम इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. ठीक है. सो दिस इज व्हाट 3, 4, 3. अगर आपने मेरी क्लासेस देखी, मैंने ड्यूरिंग, आई होप ड्यूरिंग माय क्लासेस भी मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था. ठीक है. 7 into 7 into 7, करेक्ट? तो अभी ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है. मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्या करना है. एक्चुअल में क्या, लेट्स से दिस इज वन क्यूब, राइट? चलो मैं क्यूब जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट क्वेश्चन इजी हो जाएगा, राइट? Okay, let's say this is one cube. ठीक है. Okay, ध्यान से समझना, right? This is one face and this is topmost face, bottom face, right? So top face and bottom face को मुझे कवर करना है. मैं एक पूरी लेयर ऊपर वाले फेस में एक लेयर और रख देता हूँ. जैसी ये लेयर है ना, ऐसी एक लेयर यहाँ ऊपर और रख देते हैं इसके ऊपर. ठीक है. एक क्यूब की लेयर, एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पर और हम रख देते हैं. सिमिलरली एक लेयर नीचे हम
रख लेते हैं इसके नीचे, सेम लेयर से ऐसे ही छोटे छोटे क्यूब्स की। सो ऐसे ही एक लेयर इधर रख देंगे, एक लेयर इधर रख देंगे, एक लेयर इधर से और एक लेयर पीछे से आ जाएगी, तो सारी लेयर इसके 6 फेसेस को अच्छे से कवर कर लेंगे, है ना। ऐसे ही कर सकते हैं। लेट्स से और क्लैरिटी के लिए मैं विजुअलाइज कराता हूं आपको कैसे डायग्राम कुछ ऐसे कुछ होगा। लेट्स से दिस इज वन क्यूब, ठीक है, दिस इज द क्यूब, एक फेस इधर से आ गया, एक फेस इधर से आ गया, तो कवर हो गया ये दोनों फेसेस, एक ऊपर टॉप मोस्ट फेस को कवर करने के लिए, एक बॉटम फेस को कवर करने के लिए, फ्रंट और बैक से ये कवर हो गया, राइट। सो अभी क्या होगा, ध्यान से समझना, अभी लेंथ थी 7, दिस इज द पॉइंट जो आपको समझना है, हियर लेंथ इज 7। अभी क्या हुआ, इधर से एक क्यूब और आ गया, एक क्यूब यहां से एक्स्ट्रा आ गया, सो नाउ न्यू लेंथ इज 9। Now the new cube is new height, एक नीचे से क्यूब एक्स्ट्रा ऐड हो गया, एक ऊपर से ऐड हो गया, सो न्यू हाइट इज ऑल्सो 9। एक फ्रंट से एक्स्ट्रा आ गया, एक बैक से एक्स्ट्रा आ गया, सो न्यू ब्रेथ इज ऑल्सो 9। सो नाउ द न्यू फिगर आफ्टर कवरिंग ऑल 6 faces, न्यू फिगर विल बी लाइक 9 into 9 into 9, right? Got it? मीन्स मेरे जो ओरिजिनल अंदर फिगर था उसमें फ्रंट वाले फेस को एक सरफेस ने कवर किया, एक को बैक से, तो पहले अगर पूरी लेंथ 7 थी, अभी यहां से एक एक्स्ट्रा हो गया, एक पीछे से एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 क्यूब एक्स्ट्रा हो गए, नाउ माई लेंथ इज 9। और इनिशियली इफ दैट वाज लाइक n into n into n, so now the new length is n plus 2, new height is also n plus 2, and new breadth is also n plus 2. So pehle the volume is n cube. Now the new volume was initially n cube. Now the new volume is n plus 2 whole cube. Got it? Got this point? क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले यहाँ पर n into n whole cube था, नाउ यहाँ पर 2 सरफेसेस एक्स्ट्रा आ गए, एक फ्रंट से एक बैक से, तो वो n plus 2 हो गया, टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट, तो दोनों एक सरफेस ऐसे एक्स्ट्रा आ गए, तो नाउ न्यू height is n plus 2, breadth is also n plus 2. So here for this question, this figure was like 7 into 7 into 7. Now the new figure is, after covering that cube with such a smaller cubes, that new figure will be 729. See, 729 में से original already अंदर कितने आपके पास जो पहले से available थे, 343, ये पहले से आपके पास थे, right? ये माइनस कर दो यहाँ से, you are left with 9 minus 3 6, 12 minus 4 8, 6 minus 3 3. So जो बाहर से आपने एक्स्ट्रा क्यूब ऐड किया, that is 386. So 386 small cubes required to cover this cube completely, right? 386 is the correct answer. Means initially the figure was 7 into 7 into 7. कवर करने के बाद क्या बन जाएगा, 9 into 9 into 9, तो टोटल 729 क्यूब्स हो गए। ऑलरेडी मेरे पास 343 हैं, तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा क्यूब्स नीडेड, 729 minus 343, you'll get 386, right? Got it? And this is very important question. And you can, अगर आपको ये पता है ना, तो you can solve this question within 10 or 20 seconds, right? So I'm giving you one question based on the same concept. Everyone, try to answer. Yes, try to answer this question. A large cube is cut into 125 identical small cubes. How many more such small cubes will be required to cover this cube completely? Yes, everyone. Try to answer. Yes, you all have, very good. I got one answer. Abhishek, very good. You all have 20 seconds. Let's see how many of you can answer within 20 seconds. You all have 20 seconds. A large cube is cut into 125 identical small cubes. How many more such small cubes will be required to cover this cube completely? Very good. You got 2 answers, 3 answers, 4 answers. Very good. This is n cube. The new figure will be n plus 2 whole cube, right? The new figure will be n plus 2 whole cube. So this will be 7 into 7 into 7. So this is nothing but 343. I already have one
125, and then now new figure is having 343 cubes. So how many extra cubes we have? 343 minus 125. So 13 minus 5, 8. 3 minus 2, 1. 3 minus 1 is 2. 218 cubes are required to do so. Got it? So here the final answer is 218. So these are the questions from cutting of a cube or cuboid जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. I hope ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, right? And this is done for this class. In the next class, we'll discuss question related to painting of a cube. 1 face painted, 2 face painted, 3 face painted, and so on. Right? Generally, आपने सुना होगा कि maximum 3 faces painted होते हैं, but cuboid में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, right? But cuboid का क्वेश्चन आता है तो 4 face painted भी होते हैं वहां पर, 5 faces painted भी होते हैं, right? So we'll discuss those questions also in the next class, right? This is done for today. Thank you, everyone. And if you like the video, अगर आपको समझ आया तो do like, share and subscribe the channel. ठीक है? And in the next class, we'll discuss questions related to painting of a cube. ठीक है? चलो, everyone, thank you very much. Bye-bye and take care all.